and a very good morning to all of you, and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. So as we all know, from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. Today is 7th February, that is Wednesday, and we are here with the Hindu analysis of that. So let's start with the important articles. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? Okay, so let's start with this article. 11 killed, 149 injured in massive blast at Madhya Pradesh firecracker unit. This we will be discussing. Then we'll be talking about the Uniform Civil Code bill that has been presented in the Uttarakhand Legislative Assembly. Then we will be discussing about Tamil Nadu backs Kerala unit in Supreme Court against center's move to stifle state. So these things we will be discussing about it. So let's start with this article. 11 killed, 149 injured in massive blast at Madhya Pradesh firecracker unit. Okay. So there's a place called as Harda. देखो, this is the state of Madhya Pradesh. अगर आप देखोगे, this is the Madhya Pradesh state. यहाँ पे हारदा पड़ेगा. And the nearest big city, famous city is Bhopal. ठीक है, देखो आप यहाँ पे हारदा देखो. Almost 140 kilometers away is the famous city of Bhopal. You can see, and here is Harda. Okay, so this is the place where actually the unfortunate incident of the blast happened in a cracker factory. जहाँ पर पटाखे बनते हैं, ठीक है, that's called as cracker factory. So because of some reason the blast happened and the fire was so powerful that it killed 11 people and 60 houses gutted. यानी 60 घर जो है वो जल के खाक हो गए. It means it was actually a very powerful one, and unfortunately 11 people died and all. So these were some of the news reportings that visuals from AIIMS Bhopal, where preparations have been made for the treatment of those injured in the explosion at firecracker factory in Harda. तो एक्चुअली क्या है, क्योंकि अगर नियरेस्ट जो बिग सिटी है वो भोपाल पड़ रहा है ना, और जितने भी एम्स या बड़े हॉस्पिटल है तो आपको थोड़ा बड़े ही शहर में मिलेंगे. सो immediately people would have been taken to the ambulance. I mean, with the help of ambulance, the injured people were rushed to the Bhopal, and so that is what it was in the news and all. So this was actually sorry news which we saw from the state of Madhya Pradesh. Okay, so just have an idea about it. Itna pata hona, that's more than enough. FIR has been filed. That is what the Chief Minister has said and all. Okay, the next one is Uttarakhand tables UCC bill in Assembly, Uniform Civil Code bill. Now, I hope you are aware that the Constitution also talks about Uniform Civil Code somewhere. Now, in which part it talks about? Part 3, Part 4, Part 4A, Part 5. What is the right answer to this question? बताइए. Because Uniform Civil Code is mentioned in the Constitution, and yes, the Uttarakhand Legislative Assembly has tabled the bill. So things associated with Uniform Civil Code becomes important. Yes. कौन सा पार्ट कहलाता है, उसको उसके टॉपिक को क्या कहते हैं? Yes, Ramesh, you are right. Part 4, जिसको DPSP, Directive Principle of State Policy, we call it as. So B is the right answer to this question. ठीक है. Part 3 में you will find fundamental rights. यहाँ पे आपको fundamental duties मिलेगा, है ना? यहाँ पे union मिलेगा, ठीक है? So here the right answer is option B is the right answer to this question. Which article of the Constitution talks about Uniform Civil Code? So Part 4 में, यानी Directive Principle of State Policy में you will find this Uniform Civil Code. So which article talks about it? 42, 44, 47, 51. What is the right answer? कौन से आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है? Anyone? Yes, the right answer is 44. Very good. Ramesh has answered it correctly. B is the right answer. है ना? The state shall endeavor to secure citizen and uniform civil code throughout the territory of India. And we have discussed it that these are non-justiciable in nature. इसका क्या मतलब होता है? और non-enforceable in a court of law. These things we have discussed it in our paid session when I was teaching DPSP. ठीक है? So B is the right answer to this question. Now the next is another question actually which is based on the passage given from the same article. जो द हिंदू में आर्टिकल थी उसी में से मैंने एक पैसेज उठाया है और इसे आपको आंसर करना है because these are the questions, the passage based questions being asked in the exam. Please read the question carefully, read the passage and then answer it. I am waiting for the answers. ठीक है? I will give you a minute to think. बताइए. If the bill is passed, Uttarakhand will become the first state in independent India to enact a uniform law on all communities with regard to marriage, divorce, succession, live-in relationship.
In fact, X has also uniform civil code for people from all the religion. It retained the Portuguese civil code of 1867 after its liberation in 1961. यहीं से पता चल जाएगा 1967 में गोवा लिबरेट हुआ था ना, तो ये बता ये रहे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस उत्तराखंड विल बी द फर्स्ट स्टेट टू ब्रिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड. ओके, सो बट जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, वी हैव देयर फॉर गोवा आल्सो, लेकिन वो पहले से चला रहा है, नॉट सिंस इंडिपेंडेंस बट 1867 में पोर्चुगीज सिविल कोड, बिकॉज पोर्चुगीज वे रूलिंग गोवा. आई होप यू आर अवेयर. एंड दे लेफ्ट गोवा ओनली इन 1961, दिसंबर 1961 के आसपास उन्होंने छोड़ा था, है ना. So that is why the right answer is B, and the concept of very similar to uniform civil code is still there in Goa and all. ठीक है, yes, Ramesh, you are right. B is the right answer. ठीक है, so ये पता होना चाहिए. This is important. Star market. ना. So B is the right answer. है ना. Uniform civil code is conceptualized as a set of laws that governs personal matter, including marriage, divorce, adoption, inheritance, succession from all citizens, regardless of the religion. ठीक है. So that is what we have discussed in detail in our paid sessions and all. Uniform civil code. Yes, Hemant, you are also right. B is the right answer. Goa is the right answer to this question. Now the next is the Uttarakhand government had formed a panel led by retired judge of Supreme Court X to prepare a draft for UCC in 2022. Who is X? Who होना चाहिए ना? Who is the person X? Justice S. Muralidhar, Justice Ranjana Prakash Desai, Justice Bela Trivedi, Justice R.V. Ravindran. What is the right answer? बताइए. Former Supreme Court judge के अंदर एक पैनल बनाया गया था उनके अंडर में, जिन्होंने यूसीसी प्रिपेयर किया था, ड्राफ्ट यूसीसी, which is not tabled in the Uttarakhand Assembly, Legislative Assembly. What is the right answer? The right answer is Justice Ranjana Prakash Desai. So B is the right answer. ठीक है, for UCC in 2022. Okay. So B is the right answer to this question. Yes, Hemant said you all are right. Okay. Okay, if you're watching this class, नीचे जाना. Go to the description section and there is one-on-one counseling session is there. So click on this link and you will get this Google form. Everyone should fill this Google form. Okay, that is beneficial for you. Our team will approach you and tell you about the benefits of the courses and all. Okay, the next is Tamil Nadu backs Kerala suit in Supreme Court against centers move to stifle states. So basically Kerala has gone to the Supreme Court against the central government. So that is what they are saying that is what so it was actually supported by the state of Tamil Nadu as well. Okay, now state for moving the Supreme Court to stifle government and over finances further hope to collaborate crucial challenges. So basically they are not happy with the taxes and tax collection and all. The states are not happy with that and all. That is what the idea is. अब इतना numbers वगैरह पे आपको नहीं जाना है, ठीक है, कि प्री जीएसटी में इतना था अब इतना होता है, ठीक है. So just have an idea. But the thing you should be knowing is this, ये आपको important है कि the dispute between the center versus state can be heard by. तो अगर एक स्टेट और एक सेंटर के बीच डिस्प्यूट है, ठीक है, तो कौन कहाँ हायर किया जाता है, ये आपको बताना है. इस नंबर्स पे नहीं जाना है कि पहले जीएसटी कलेक्शन इतना होता था अब इतना होता है, so we are not happy and all. Okay, you're not supposed to go in that detail, but yes, you should have an idea that yes. तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा बात सही है कि अगर एक स्टेट वर्सेस सेंटर टसल हो जाए कोई लीगल इश्यूज पे या कोई इश्यू पे, तो स्टेट या सेंटर कहां जा सकती है, वेयर इट विल गो. सो द मैटर विल बी डिसाइडेड बाय व्हाट? एनीवन? यस रमेश, यू आर राइट. ओनली बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, बाय बोथ द हाई कोर्ट कंसर्न द सुप्रीम कोर्ट. नो, हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं होता है कि वो स्टेट और सेंटर का डिस्प्यूट डिसाइड कर सके. सो एक्चुअली देयर इज आर्टिकल 131 क्लियरली मेंशन्ड, original jurisdiction of Supreme Court. So A is the right answer. देखो लिखा है. As a federal court, the Supreme Court has the right to settle the dispute between the different units of the Indian Federation, such as between center and one more state and between the state. अगर दो स्टेट के बीच भी टसल हो जाए, स्टेट 1 वर्सेस स्टेट 2 ऐसा कुछ हो जाए, या स्टेट 1 वर्सेस सेंटर हो जाए, if something like this happens, then in that case Article 131 original jurisdiction of Supreme Court should be there and all, है ना. So it will, they'll have to directly go to the Supreme Court. और यही अभी हुआ भी, ये न्यूज में देखो ना, केरला गवर्नमेंट has gone to the Supreme Court, है ना. So of course this also says this, है ना. Yes, A is the right answer. Yes, Ramesh, you are right, under original jurisdiction. Okay, okay, just before moving on, please download our app, go to CLAT section, and here is talk to counselor ka button, and click on that, and you will get to know more about our courses. From 2nd February to 11th February, we'll be having an all-India open mock CLAT 2025. Do attempt it. And 11th February at 6 p.m. we'll be having a session how to start preparing for CLAT 2025 with Nivedita ma'am.
So register now. The link is given in the description. Okay. 2025 clay, we are having this course. Call on this number if you have any query. And this is 2024 course test series के लिए. Okay. Now let's move on to the next one. Union government's reign on financial transfers to state. Okay. Now reign मतलब क्या होता है? लगाम लगाना in the sense कि some actually लगाम लगाना समझते हो? We call it in Hindi. Reign means it's sort of constraint, है ना? रोक लगाना, something like that, है ना? On financial transfers to the state. Now, since the author is talking about the concept of finance commission, and that is why there's a question for you. Who has been recently appointed as the chairman of 16th Finance Commission? Abhi recently it has been set up, and it was coming in the news. Who is the chairman of the 16th Finance Commission? N.K. Singh, Arvind Panagari, Arvind Subramaniam, Shakti Kanta Das. What is the right answer? ऋषि कुमार झा, ये एमएससीटी के लिए भी कोर्स है, आप कॉल कीजिएगा उस नंबर पे जाके, ठीक है? आप ऐप डाउनलोड कीजिए, ठीक है? और यहाँ पे टॉक टू आवर काउंसलर होगा, वहां पे जाके आप क्लिक कीजिएगा, यू विल गेट द कोर्स, ठीक है? ठीक है, ये आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9538895678 पे, यू विल गेट द नो अबाउट द प्रोसेस, ठीक है? ओके, यस यस, ऋषि कुमार झा, हेमंत सैनी, रमेश, यू ऑल राइट. अरविंद पन्नागरिया. एनके सिंह जो थे 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे. सो हियर द राइट आंसर इज बी, अरविंद पन्नागरिया. एक्स नीति आयोग वाइस चेयरमैन इज द न्यू एक्चुअली इज टू लीड 16th फाइनेंस कमीशन. सो बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है? यस रमेश, यू ऑल राइट. हाँ, नाउ सो द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट 14th फाइनेंस कमीशन, 13th फाइनेंस कमीशन एंड ऑल्सो. देखो एक्चुअली क्या होता है, 13th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी 32% टैक्स डेवल्यूशन. फिर 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी 42%. देन 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी 41%. ये 1% रिड्यूस इसलिए हुआ था बिकॉज जम्मू कश्मीर बिकेम ए यूनियन टेरिटरी, ठीक है? इसीलिए. ओके, अदरवाइज 14 और 15 का सेम रहा था. मतलब ये कि इफ सेंटर हैज 100 रुपी, इट शुड ट्रांसफर 41 रुपीज टू द स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स टोटल मिला के. But that is what the author is saying. But he's saying, the author is saying but in fact, in practical, it has reduced. Union government has been reducing financial transfers to state. तो फाइनेंस कमीशन तो कुछ और कहा था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया. दैट इज व्हाट दे हैव सेड. देखो उसमें कुछ लिखा है कि जैसा दो द 14th and 15th फाइनेंस कमीशन recommended 42 and 41% respectively. The net tax revenue of the state share was actually just around 35% in 2015-16 and 30% in 2023-24 budget. तो ये कहना चाह रहे हैं वो कि 14th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन था 42% का, वो भी पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं हुआ, वो 35% रह गया. और 15th फाइनेंस कमीशन का जो था 41%, दैट एक्चुअली वाज रिमेन टू 30% ओनली. सो द ऑथर इज सेइंग दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअली इज रिड्यूसिंग द allocation, tax allocation to the states. That is what the author has said. ठीक है? Then the author is talking about grant in aid भी दिया आता है. This is also given by the center to the state. This has also been reduced and all. तो ये सब वो बता रहे हैं, ठीक है? Then the author is talking about दो तरह की स्कीम होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रली सेक्टर स्कीम, ठीक है? दो तरह की सेंट्रल सेक्टर स्कीम. ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें शेयर होता है. जैसे इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड सम स्कीम, मे बी 60% विल बी शेयर्ड, टैक्स विल बी शेयर्ड, और 60% एक्सपेंडिचर ऑफ द स्कीम विल बी शेयर्ड बाय द यूनियन, तो 40% बाय द स्टेट. ऐसा कुछ होता है. जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, in central sector scheme all 100% share is from the union government, ठीक है? तो पूरा अगर कोई सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो सारा पैसा केंद्र सरकार देगी इंप्लीमेंट करने के लिए. और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो कुछ शेयर होता है 60-40, 70-30 लाइक दैट, ठीक है? सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. ये सब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए. Now since we are talking about finance commission, can you please tell me which of the following article talks about the finance commission? 148, 280, 312, 291. What is the right answer? बताइए तो. Which of the following article of the Constitution deals with finance commission? बताइए. Yes, 280. Very good. B is the right answer. ये तो CAG से related है 148. So B is the right answer. Yes, Ramesh, Rishi Kumar Jha, you all right. And Constitute Finance Commission gives its recommendation on the distribution of taxes and all. So B is the right answer. Yes. Okay. Let's move on to the next one. A travesty manipulation of Chandigarh mayor post has grave implications for democracy. This we had discussed it yesterday as well. The Supreme Court was not happy with it actually, and the Chief Justice of India orally observed that it is a matter of democracy.
बट दिस वाज एन ओरल ऑब्जर्वेशन, जबान से कहा हुआ था ना, अभी रिटन ऑर्डर नहीं कुछ है मतलब. और सुप्रीम कोर्ट ऑन चंडीगढ़ मेयर पोल्स. ओके, नाउ व्हाट हैपेंड वाज एक्चुअली देयर इज एन एलिगेशन अगेंस्ट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. इनके खिलाफ एलिगेशन ये है that he actually favored one political party over the other, and he cancelled some of the ballot paper, some of the voting ballot paper, so as to benefit one political party. That is the allegation, and the Supreme Court said he should be prosecuted. Prosecuted में तो होता है we need to initiate a case against the person. ठीक है. Supreme Court of India's stinging remark on the manner in which Mayor of Chandigarh was elected has confirmed the suspicious victory and all. So these are the things and all. So it was done in a wrong way. So as India tie up, Chandigarh Mayor post hang on 8 invalid votes. Actually क्या होता है, 8 वोट को invalid कर दिया गया. So the vote was invalidated in such a way that it favored some other political party instead of that. अगर इसको invalid नहीं किया जाता तो कोई और पार्टी जीतती. So that was the allegation, that if these votes were not invalidated, then perhaps some other political party would have won it. तो यही allegation इन पर the presiding officer पर कि he has done I mean in the wrong way, he is manipulated and all. So that is what the allegation is. है ना. The mayor is chosen by 35 elected councillors and all. So basically the person Mr. Masi who presided over the election was accused of not showing the invalid ballot vote to the candidates and all. होता क्या है, अगर आपको कोई वोट invalid हो गया, उसका कोई रीजन होता है ना कि why you have invalidated it, क्या रीजन था कि आपने इनवैलिडेट कर दिया. फिर आप उसको पब्लिक में दिखाओगे बैलेट पेपर को कि टू द कैंडिडेट्स कि सर यस दीज आर द इनवैलिड वोट्स एंड द रीजन यू विल एक्सप्लेन कि मैंने इसको इनवैलिड इसलिए किया है. हो सकता है कोई रीजन हो, किसी ने साइन नहीं किया हो या किसी ने कुछ नहीं किया हो. सो देयर माइट बी सम रूल्स. सो इफ द पर्सन हैज नॉट फॉलोड द रूल्स व्हाइल वोटिंग इट, यू विल इनवैलिडेट इट. ओके, तो वो जो है उन्होंने शो नहीं किया. दिस इज एन एलिगेशन कि इफ यू आर इनवैलिडेटिंग अ वोट, यू आर सपोज टू शो इट टू द कैंडिडेट्स दैट यस see this is the reason we are actually invalidating it. देखो democracy is all about transparency है ना, ऐसा कहा जाता है ना कि the one of the key values of democracy is transparency. मतलब क्या है कि if anyone I mean all the democratic process should be completely open, it should not be opaque. यानी जनता को के सामने पब्लिक खुला होना चाहिए कि ये ऐसे क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ. तो सारे गवर्नमेंट मशीनरी को पब्लिक में एक्सप्लेन करना होता है रीजन है ना. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यू हैव इनवैलिडेटेड अ बैलेट पेपर, सो यू हैव टू एक्सप्लेन और यू हैव टू शो इट टू एवरीवन दैट यस बिकॉज ऑफ दिस रीजन they have this is violative of the this rule, and because of which I am invalidating this ballot paper है ना. So ये चीज है, that is the idea. The apex court, that is the Supreme Court, has done right thing in ordering the ballots and records be handed over to the High Court Registrar General. अब क्या हुआ कि चूंकि चंडीगढ़ में पोल हुआ है, सो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है ना, तो उसमें रजिस्ट्रार होता है. आपको पता होगा एवरी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैज 2 एस्पेक्ट्स. एक तो रजिस्ट्री होता है, एक जुडिशरी मतलब जजेस होते हैं जहां पर. तो रजिस्ट्रेटिव जो होता है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट होता है ना. ओके, सो बेसिकली द सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी बैलेट पेपर हैं, ऑल द बैलेट पेपर शुड बी सबमिटेड. जो वोटिंग प्रोसेस हुआ था सबको रजिस्ट्री में सबमिट करना है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के. So that is what the Supreme Court has said कि submit all the records, जितने भी कागज से पेपर है जो भी साइन किए गए, should be handed immediately to the registry of the Punjab and Haryana High Court. हो सकता है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए let's say if it is required, the Supreme Court will ask it कि लाओ हमको दो, दिखाओ, show me all the ballot papers. It might ask Supreme Court है ना. Immediately क्यों कहा गया कि बैलेट पेपर वहां जमा करने के लिए? Because maybe it might get destroyed or it might get tampered. उसको कोई चेंज कर दे तो उससे पहले आप जो है वो आप रजिस्ट्री में इमीडिएटली जमा कर दीजिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के. ओके, सो दैट इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड है ना. फिर एक नीचे आर्टिकल थी अंडरस्टैंडिंग द नुआंसेस ऑफ द लिबरल आर्ट्स. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो यू कैन स्किप इट इफ यू वांट. ठीक है. साइड में जो आर्टिकल थी, मेंट स्टेट म्यूजिंग इंटरिम बजट गिव्स द सेंट्रल बैंक सम मोर रूम टू द मैन्यूवर. अब देखो, आई होप यू आर अवेयर रिसेंटली द इंटरिम बजट केम एंड ऑल है ना. Why we are saying interim budget? Because we have elections, the upcoming elections. So after the election, the new government will come and they will present the full budget. ठीक है ना. This interim budget, तो budget जो होता है ना वो upcoming fiscal year के लिए होता है. So let's say this budget will be for 2024-2025. But you know, let's say the elections will happen in April or May. If the new government comes, तो हो सकता है जून में अपना bill they will come up with an own complete bill and a complete budget. Okay. तो इधर तो 3-4 महीना है, उसके लिए बजट समझ लो इंटरिम पर टेम्परेरी टाइप है ना. एंड आफ्टर दैट देयर विल बी अ कंप्लीट बजट. सो द लेटेस्ट बाई मंथली मीटिंग, यानी हर 15 दिन पर एक मीटिंग होती है ना. मीटिंग ऑफ द
बाई मंथली मीटिंग, हर 2 महीने सॉरी मीटिंग ऑफ द Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee, whose outcomes will be revealed by RBI Governor Shaktikant Das on Thursday, is widely expected to result in a status quo and all. Status quo का मतलब क्या होता है? Status quo मतलब as it is, no change. ठीक है. अब देखो, I have told you there is a committee called as Monetary Policy Committee which determines repo rate, reverse repo rate, and a statutory liquidity ratio, cash reserve ratio. These all are decided by Monetary Policy Committee. तो ऐसा उम्मीद किया जाता है कि मोस्ट लाइकली द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी विल मेंटेन स्टेटस को. इट मींस इट विल नॉट चेंज रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये सब चेंज नहीं करेंगे मोस्ट लाइकली. दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. ठीक है. सो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी? 5, 6, 4, 3 बताइए तो. एंड हु इज द चेयरमैन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी? हियर इट इज रिटन आरबीआई गवर्नर मिस्टर शक्तिकांता दास, है ना, शक्तिकांता दास. ठीक है. ओके. जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं. यस, द राइट आंसर इज बी. 6 इज द राइट आंसर. यस रमेश, यू आर राइट. बी इज द राइट आंसर, है ना. ओके ओके. सो यही सब है. 6 लोग, देखो 6 मेंबर होते हैं. 3 आर एक्चुअली फ्रॉम आरबीआई एंड 3 इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके. और इस 3 में से एक जो होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं. 1 इज द आरबीआई गवर्नर हु इज एक्चुअली द, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन और चेयरपर्सन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. ठीक है. सो दिस यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. सो दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट. अब यूएस फेडरल रिजर्व की बात करें तो अब इतना डिटेल नहीं जाना है. और मैंने ये सब बताया है आपको कि आई हैव टॉट इन द पेड क्लासेस दैट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी टेक्स डिसीजन ऑन रेपो रेट, reverse repo rate, etc., and a statutory liquidity ratio, cash reserve ratio, and these actually controls the money supply in the economy. ये भी मैंने बताया, which actually is helpful in controlling inflation or deflation. ये सब linked होता है. अगर रेपो रेट को बढ़ाओगे घटाओगे तो मनी सप्लाई उसी तरह से चेंज होगा और उसी हिसाब से इन्फ्लेशन चेंज होगा, है ना. मनी सप्लाई के हिसाब से इन्फ्लेशन चेंज होता है. वी हैव डिस्कस दीस थिंग्स इन आवर पेड क्लासेस इन डिटेल. तो यहाँ पे मैं नहीं जा रहा हूँ वहाँ पर इतना डिटेल में, बट इतना आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन जो है वो इन्फ्लेशन को असर करता है. दे कैन कंट्रोल द इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू द बाय ट्विकिंग द रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड ऑल. ठीक है. नाउ दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. व्हाट इज सीआरआर? कैश रिजर्व रेशियो. सब पढ़ाया हुआ पेड क्लासेस में. कैश रिजर्व रेशियो. SLR is statutory liquidity ratio. Statutory liquidity ratio. ठीक है. Okay, just have an idea. Now, एक और आर्टिकल ओपिनियन पेज में, the severe erosion of fiscal federalism. Erosion मतलब समझते हो ना? हाँ, erosion तो soil से related काम है, but यहाँ पे भी आप समझ रहे हो. Federalism क्या होता है? I have told you many times that federalism means there are different constituent units, there's different states. And there is a center also, both are there, and the states are not subordinate to the center. States are independently, by and large independently working, है ना. And that's the idea. Fiscal federalism का मतलब होता है financial aspect में the state should be independent, है ना, to a large extent. As far as financial aspect is concerned, the state should be largely independent. Okay. Okay. Now, on 8 February, Kerala CM Pinarayi Vijayan will lead a protest in New Delhi against the Center for placing Kerala on a financial embargo. Embargo मतलब क्या होता है? Understand? Embargo एक तरह से financial boycott कह सकते हो, economic boycott type thing. ये international relation में embargo word use किया जाता है. Okay. So here actually, so according to this, I mean the Kerala government has said that no, the center has imposed net borrowing ceiling. देखो अब net borrowing ceiling क्या होता है? सीलिंग मतलब क्या होता है? अपर लिमिट लगाना, अपर लिमिट या अपर कैप लगाना, कैप भी लिखते हैं. इट मींस एक्चुअली द स्टेट गवर्नमेंट, आई मीन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड सम नेट बोरिंग सीलिंग ऑन द स्टेट व्हिच लिमिट्स बोरिंग फ्रॉम ऑल सोर्सेज एंड ऑल. उसमें क्या हो गया कि कुछ अपर लिमिट लगा दी कि इससे ज्यादा आप बोरिंग नहीं कर सकते. आप इतना समझ लो सिंपल लैंग्वेज में. ओके. द स्टेट कैन नॉट बोरो बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट. एंड against it, the state government, the Kerala state government has gone to the Supreme Court. Okay, so let's wait for the judgment of Supreme Court.
However, the AG, the Attorney General जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉयर होते हैं, who is the lawyer of the central government, he has said that debts of states affects countries' credit rating. उन्होंने ये कहा है कि अगर स्टेट बहुत ज्यादा लोन लेगा, if it takes too much loans, it will affect the credit rating of the entire country. ठीक है, बिकॉज कंट्री जो होता है वो डिफरेंट स्टेट से मिलकर तो बना है, तो अगर बहुत सारे स्टेट बहुत ज्यादा लोन लेने लगेंगे तो कंट्री की क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाएगी. यू अंडरस्टैंड? क्रेडिट रेटिंग तो समझते होगे, है ना, कि रेटिंग की हाउ मच, देखो क्रेडिट रेटिंग मतलब होता है ना कि आपके पास्ट बिहेवियर एज फार एज योर क्रेडिट इज कंसर्न, कि आप लोन टाइम पर पहुंचा रहे हो कि नहीं, वेदर यू आर अ प्राइम बोरोवर, वेदर इफ यू हैव टेकन द लोन, वेदर यू रिटर्न इट ऑन द टाइम और नॉट, उससे क्रेडिट रेटिंग बनती है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बंदा एक्स है, he has taken the loan on time in the past and return it on time, इस बंदे का क्रेडिट रेटिंग अच्छा गुड माना जाएगा. If the person is Y, he has taken a loan but he has not returned on time, he took 15 days extra, so his credit rating will be considered as slightly bad as compared to X. So credit rating जो होती है आपके पूरे पास्ट की हिस्ट्री बताती है कि आपने लोन लिया है तो टाइम पे पहुंचाया है कि नहीं, है ना. So these are the things. So that is what the Attorney General has said, that yes, we need to limit it. The reason is because if the states will borrow too much, it will actually affect the credit rating of the country. तो अब देखो what the Supreme Court will decide. So both the arguments will be heard and the Supreme Court will decide finally. ठीक है, तो ये सब है ना. केरला गवर्नमेंट मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट्स कैप, मैंने बताया ना, अपर लिमिट ऑन बोरोइंग लिमिट. ओके, लोन लेने के लिमिट पर कुछ लिमिट लगा दिया गवर्नमेंट ने. Maldives accelerate plans to lower dependence on India. I hope you are aware, this was also very much in the news. यहाँ पर इंडिया है, this is Maldives, है ना. And I hope you are aware, recently PM मोदी visited लक्षद्वीप, यहाँ पे लक्षद्वीप मिलेगा पास में ही. And what happened was some of the ministers commented and all, and after that tweets of boycott Maldives started trending and all. And one more thing you should be knowing, that the new president of Maldives is actually Mohammed Muizzu, and he is considered as more near to China or pro-China. In fact, he has led a go out India out campaign was there, which was supported by him. In fact, he has told the Indian government to withdraw the military by 15th March. So it appears that the new government of Maldives is quite pro-China. ना तो किस तरह की न्यूज़ भी आ रही थी, pro-China president wants India out. देखो 22 नवंबर की न्यूज़ है. More robust ties with China amidst leader. देखो 10 जनवरी की न्यूज़ है. Pro-China leader gives Indian troop march and all. तो ये सब का है. China Maldives upgrade ties with infrastructure deals. So basically अगर आप देखोगे गौर से, it's not very good for India if it is pro-China. The reason is very simple. देखो एक्चुअली क्या है, इट्स वेरी नियर. देखो यहाँ पे मान लो प्रो चाइना हो गया, चाइना ने अपनी शिप लगाना शुरू कर दिया. if there is, let's say, the ship of Chinese Navy starts coming in this region, it might do some, let's say, information spying or something like that, because ये काफी करीब है ना. So this is not actually good news for the Indian Navy, that why should Chinese Navy or Chinese ship should be coming in this region and all. It is not considered as a good from strategic point of view and all. ठीक है. Okay, if you're watching this class, नीचे जाना है, one-on-one counseling session is there. Click on this link. You will get this Google form, and everyone should please fill this Google form. That would be very, very beneficial for you. Now, the next is understanding the delimitation exercise. अब देखो इसमें भी ज़्यादा नहीं जाना है डिटेल में, but delimitation exercise we have discussed it in the past. होता ये है, देखो इसमें जैसे आर्टिकल 82 में mentioned है, जैसे मान लो every census के बाद दिखाना है, after the completion of every census, allocation of seats in House of People मतलब लोक सभा to the states and division of each state under territorial constitution shall be readjusted, है ना. अब देखो उसमें होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आइडियली एवरी सेंसस के बाद, जैसे 2001 में सेंसस हुआ, 2011 में सेंसस हुआ, so the population gets changed, the population of the districts get changed, है ना. the MLA constituency, the parliamentary constituency, तो मान लो पहले MLA यहाँ था, MLA किस constituency था कि 4, MLA 1, MLA 2, MLA 3, MLA 4. अब आबादी बढ़ गई, मान लो 4 में आबादी बढ़ गई, तो उसका ना चेंज किया जाएगा constituency. We have to change the constituency of MLAs according to the proportion to the population. ठीक है, in such a way that every MLA constituency or MP constituency should have a near same population. ठीक है, इस तरह से बाउंड्री चेंज किया जाएगा, उसको delimitation commission कहता है. However, in 1971 we have freezed it till 2026. बीच में delimitation इंडिया में नहीं किया गया था, 2026 में अब delimitation किया जाएगा because of the constitutional amendment done in the past. So after 2026, the first census will happen most likely in 2031.
तो 2031 में सेंसस होगा, उसके बाद देयर विल बी अ डिलिमिटेशन कमीशन विल बी सेट अप एंड द बाउंड्रीज विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये सब बात हो रही है। नाउ द नेक्स्ट इज एफ्लुएंट अमंग सब कास्ट could be omitted from quota list observed Supreme Court। ये मैंने yesterday डिस्कस किया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग, जैसे एक डिबेट चलता है जैसे OBCs आर देयर, दे आर गेटिंग 27% रिजर्वेशन, बट नॉट ऑल OBCs आर इक्वल। सम ऑफ द विद इन द OBC, सम आर रिच OBCs caste and some are poor, so those who are the rich they get more benefit rather than the poor। जो अमीर है उसमें उन्हीं को ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है रिजर्वेशन का और गरीब को नहीं मिलता है। सो दैट इज एन इशू। द सेकंड थिंग, जैसे OBC में ना एटलीस्ट द सुप्रीम कोर्ट ब्रॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर, दैट ओके इफ योर पेरेंट्स आर अर्निंग मोर देन 8 लाख per year, then you are not supposed to actually come in the OBC list। Even if you're an OBC, you should get you should not get reservation। क्यों? Because you are rich। तो आपके पेरेंट्स जब अमीर हैं तो वो अफोर्ड कर सकते हैं एजुकेशन, देन व्हाई शुड यू बी गेटिंग रिजर्वेशन? बट दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट देयर इन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, सो देयर इज नो क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक चीज तो ये पिटीशन फाइल किया है कि आप क्रीमी लेयर को कॉन्सेप्ट, जो 7 जज बेंच एक्चुअली इज हियरिंग द मैटर, सो द पिटीशन हैज बीन फाइल्ड एंड ऑल। तो जैसे एक जज साहब ने कहा कि इफ द लेट्स से वंस अ पर्सन गेट्स इनटू IAS IPS his children do not suffer from disability and all। मान लो कोई SC ST से and the person has become IAS IPS या कोई भी बड़े मतलब let's say he is earning a good amount of money salary, तो फिर उनके बच्चे को अब जरूरत नहीं है रिजर्वेशन की। So if a person is let's say from a scheduled caste or scheduled tribe but the person is rich and powerful, मान लो कोई जज बन गया, हाई कोर्ट का जज बन गया, कोई IAS IPS IRS समथिंग लाइक बन गया, so then the person do not need reservation, the children of the person, इनके बच्चे को अब रिजर्वेशन होती है बिकॉज दे आर रिच, सो दे कैन अफोर्ड देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन। इसमें जो कॉन्सेप्ट वही है कि SC ST में भी चाहे तो फिर आप क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाइए, ब्रिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर, ओके, एंड यू कैन डू सम सब क्लासिफिकेशन और सब कैटेगराइजेशन, जैसे OBC में सब कैटेगराइजेशन भी बात की गई, मींस वी शुड डिफरेंशिएट बिटवीन द रिच शेड्यूल कास्ट एंड द पुअर शेड्यूल कास्ट, सिमिलरली रिच शेड्यूल ट्राइब एंड द पुअर शेड्यूल ट्राइब, उसमें भी कुछ डिफरेंशिएट कीजिए ताकि गरीब को रिजर्वेशन मिले। हाँ, द मेन पर्पस इज दैट द वीकर एंड द पुअर शुड गेट रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का मेन पर्पस ही है कि वीकर्स है ना, पुअर्स एंड वीकर्स सेक्शन शुड गेट रिजर्वेशन, शुड गेट द बेनिफिट, दैट इज व्हाट द आइडिया इज, है ना, नॉट द रिच वन और द एफ्लुएंट वंस, है ना, दैट इज व्हाट द आइडिया इज। ठीक है, तो उसी पे अब हियरिंग चल रहा है, तो अब देखो फाइनल जजमेंट आएगा तभी वी विल बी कमेंटिंग ऑन दैट। अच्छा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट द कांसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर फॉर OBC लिख देता हूं, वाज ब्रॉट इन? M नागराज केस, इंदिरा सानी केस, SR बोमाई केस, शत्रुघ्न चौहान केस। व्हाट इज द राइट आंसर? बताइए। कांसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर OBC में जो लाया गया था वो कौन से जजमेंट में लाया गया था? इट्स वेरी फेमस, ऑल्सो नोन एज मंडल केस, इसको कहते हैं, 9 जज बेंच। एनीवन बताइए कोई? द राइट आंसर इज इंदिरा सानी केस, 1992 के आई थिंक आसपास था, मंडल केस इट इज ऑल्सो कॉल्ड, है ना, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। द नेक्स्ट इज आफ्टर 5 months of pause due to Gaza war, government hopes to move on to IMEC। देखो, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करी गई थी G20 समिट 2023 में। ओके, सो देखो दिस इज एक्चुअली द फोटो ऑफ G20 समिट व्हिच हैपेंड इन सितंबर लास्ट ईयर, एंड हियर द कांसेप्ट ऑफ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर वाज प्रपोज्ड। अब ये क्या है? देखो, जनरली वी गो लाइक दिस, इफ यू सी द मैप, हियर इज मुंबई, चलो मुंबई से अगर आपको जाना है ईस्ट यूरोप, सो यू विल गो लाइक दिस, है ना, ऐसे ही जाओगे, यहाँ पे सुएज कैनाल है, ओके, but now there is another route and this is you will go like this, UAE से, okay, this is the proposed route from यहाँ पे Israel है and from here you can go, ठीक है, so let me write it, this is UAE, United Arab Emirates, this is Saudi Arab, this is Israel, ठीक है, तो कैसे जाएंगे? यहाँ से UAE, फिर सऊदी अरब, फिर इजराइल होकर के ग्रीस, ठीक है, so this was another route that was proposed in India, Middle East, East Europe Economic Corridor. This was proposed in G20 summit last year in 2023. But what is the issue? Issue ये कि यहाँ पर ना war हो गया. Here in Israel, there is a Israel-Palestine war is happening. No, when there is an Israel-Palestine war is happening, IMEC becomes difficult to be implemented.
ओके, आईमेक मुश्किल हो गया ना इम्प्लीमेंट करना। तो इसमें ये बात आ रही है कि आफ्टर 5 months of pause due to Gaza war, government hopes to move on to IMEC. अगर ये pause हो जाए in war, let's say war in Gaza and all, if it gets paused, then we can think of IMEC getting implemented. ठीक है, आप समझ गए ना ये? Similarly, India asked citizens in Myanmar, Rakhine state to leave immediately. I hope you are aware, Myanmar है, यहाँ पे Rakhine state है. So things are not very fine, especially after the military coup of 1st February 2021. So that is why India has asked the people of living in Rakhine state to please come back and all. ठीक है. फिर Blinken to push for Gaza truce during tour of West Asia. So Anthony Blinken is actually the Secretary of State. Secretary of State. He met President al-Sisi. तो इसको West Asia कहते हैं. I have told you. So actually he visited Egypt. Egypt में he visited actually. है ना, Egypt है. This is Israel. We have discussed. This is West Bank, Gaza. ये सब मैंने discuss किया है already. So I'm not discussing it here. Okay, so basically he arrived in Egypt and met, have a talk with Egyptian president. His name is Abdel Fattah al-Sisi. Okay, so he met the president of Egypt and he's Anthony Blinken. He's the Secretary of State. Secretary of State कौन होता है? Secretary of State is they do not call it as foreign minister. So if from India's perspective, it will be considered as foreign minister. ठीक है? तो वो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूएसए को फॉरेन मिनिस्टर नहीं कहते, दे कॉल इट एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. ठीक है. सो ही मेट द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट अब्दुल फत्ताह अल सीसी एंड ऑल. So these are the things being talked about. अब देखो इसमें बात क्या आ रही है कि ब्लिंकन टू पुश फॉर गाजा ट्रूस. ट्रूस का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप द वॉर ड्यूरिंग टूर ऑफ वेस्ट एशिया ना. देखो लिखा हुआ एग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज और ओपोनेंट्स टू स्टॉप फाइटिंग. सो अगर दो एनिमीज लड़ रहे हैं, उसको सॉल्यूशन वॉर को अगर रोकना है, दैट्स कॉल्ड एज ट्रूस. सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन, whether the truce will happen or not. So these things you should be knowing it about it. So if you're watching this class, नीचे जाना, one-on-one counseling session is there. Click on this link. You will get this Google form. So everyone should fill this Google form. Okay. So this is all about today's class. Please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S exam prep app. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.